Good evening. Welcome to day two. I hope you're all fine. So let's start the session. So, how many of you tried today's question? May I have a quick raise of hands? Okay. I can see many people try today's question. And how many of you were able to solve the first question? I hope you can see the screen. Okay, many people were able to do. Nice. So during this session, I would like you all to be as interactive as possible. You can like ask your doubts, maybe unmute or maybe ask in the chat. And okay, let's see the first question. So it says given an integer array nums sorted in non-decreasing order, remove the duplicates in place such that each unique element appear only once. So we have a non-decreasing like array, which means the elements can be equal or it will be increasing. So we have to like the output of this question is very interesting. So the output of this question says, let's say there are k unique elements. So the first k elements of this array should be unique, and rest elements doesn't matter. Like, is there anyone who would like to tell their approach before I start with mine? Okay. So, like for example, like the first example, 112 is given. So after the first element one, the second element is a repetition. So we have to remove it. The next unique element 2 should be there. So we have to return the number of unique elements, which in this is 2, 1 and 2. But the nums array should also contain the elements, like first k elements, like first there are two unique elements, so k will be 2. So first k elements, the first two elements should be unique, 1 and 2. Rest doesn't matter. This extra one could be here, and it is absolutely fine. So इसका approach, like सबसे simple approach, हाँ इसका सबसे simple approach तो ये हुआ कि let's say this was our array. तो उसका सबसे simple approach क्या है कि if I am on this element, I will compare it with the previous. If it is same, I have to remove it. And by remove, I could just put the next unique element over here. Or we can say whenever I find whenever I find a new unique element, I have to put it in the place where I have found the number of elements. For example, till this place, number of unique elements are 1. So when I find that the next unique element is 2, I will put it at, let's say, nums 1. I will put it in this place. So the array will become something of this sort. This element will come here. This might still be 2, doesn't matter. So if we look at the if we quickly look at the code, hmm, so I have initialized this.
initialize the answer to 1, and if n is less than equal to 0, which basically just indicates कि अगर ये array is like खाली है, तो there is no unique element, just return 0. Otherwise, we will start from I is equal to 1. Why 1? Because we are using I minus 1. And we will compare if this is not equal to the previous element. अगर कोई एलिमेंट उसके प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल नहीं है, तो we will just increment the answer and we will put this unique element in place of that, and we will return the array. Like, is it understandable? Can I have a hand raise who all understood the concept? And like, anyone in the meet who didn't get the concept? Okay, I assume everyone. Yes, Akshat, do you have any doubt? Okay, I assume this was pretty straightforward. Okay, so we have a next. The next question that was given for today was just remove one element to make the array strictly increasing. So I hope everyone is clear with the word strictly increasing. That means the array should not be decreasing, or the next element should not be equal also. So in this case, it was given that we have an array nums and we have to return true if it is possible to remove exactly one element from the array and it will become strictly increasing. False otherwise. For example, in this case, 1 से 2 में गए तो it is increasing, 2 से 10 में गए it is still increasing, but 10 से 5 में गए it's not increasing, 5 से 7 में गए it is increasing. So we see कि अगर 10 को हटा दें तो 1 2 5 7 is strictly increasing. And next example we can see when we move to 2, uh, 2 से 3 में गए तो it's increasing, 3 से 1 में गए तो it's decreasing, 1 से 2 में it's increasing. But there is no single element in this whole array which can be removed कि ये strictly increasing बन जाए. Like अगर मैं 3 हटाऊंगा तो 2 से 1 is decreasing, 2 हटाएंगे तो 3 से 1 is decreasing. So it is not possible to do it. In this case, all three are equal. Like if I remove any one of it, it will still be like two equals. So it will never be strictly increasing. I hope the problem is understandable. Okay. So if we look at the approach, we will keep on checking if the next element is fulfilling the condition of strictly increasing. Like we will start checking our array from here and we will see if it is strictly increasing. Yes. Strictly increasing. Yes. We detect the first problem over here. Like at this position, we will see कि 10 के बाद this is strictly increasing, this is decreasing. When we encounter an element which is not strictly decreasing, we will check two things. We will compare this element with this. अगर के बाद 5 is strictly increasing, ये element हटेगा. If not, then this element will be removed. Let me take two examples for this. Let's say the same example 1, 2, 10, 5, and 7. And another example is 1, 2, 10, maybe 3, then 15. Let's say
These two examples are there. यहाँ भी इंक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ भी इंक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ दिक्कत आई, मतलब जब इस पोजीशन पे आएंगे तब दिक्कत आएगी। यहाँ से यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ इंक्रीजिंग है, लेकिन जब यहाँ पे आए तो लेट मी टेक दिस एज 1 नॉट 3, 1, तो फिर से इस पोजीशन में दिक्कत आएगी। जब भी हमें we encounter a problem, like problem is basically कि strictly increasing नहीं है, so whenever we encounter this, what we will do is we will first compare it with this element, which is our I minus 2 if this is the ith element. अगर ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट से बड़ा है, like 5 is bigger than 2, then 10, this 10 is the problem, so 10 should be removed. If this element is not bigger than this, मतलब जैसे 1 है 2 से बड़ा नहीं है, तो दिक्कत ही 1 में है, so this 1 should be removed. So these two cases will be formed whenever we have to remove like one element. After this condition कि कौन सा element remove होगा ये देखने के बाद we will check the whole array कि बाकी तो strictly increasing है ना, अगर array में कहीं और भी दिक्कत आई तो हमारा simple false आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि exactly one element हटाना है, और यहाँ हमें पता लग गया कि exactly कौन सा element हटाना है ताकि ताकि हमारा जो array है वो strictly increasing बन जाए। तो इसका अगर हम कोड देखें फटाफट, इसका कोड देखें तो हमारे पास, तो हमने काउंट नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज किया जो हमारे जहां जहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में से काउंट करेगा। अगर तो ये 2 से बड़ा हो गया या 2 के बराबर हो गया तो हम एग्जैक्टली वन एलिमेंट से इसको नहीं बना पाएंगे, तो सिंपल फॉल्स है। अगर 2 से कम रहा तो स्ट्रिक्टली एक एलिमेंट हटाने से हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना पाएंगे। लाइक देयर कुड बी वन डाउट कि अगर काउंट 0 ही रहा तो आंसर ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? लाइक इफ एनीवन इज विलिंग टू आंसर, if count is 0, then can it is possible to make it strictly increasing by removing one element? No, it is already strictly increasing. uh, तो true आएगा false आएगा? Yes, we can prove it. True आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि हम किसी को भी रिमूव कर दें तो उसके बाद वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहेगा। इट शुड बी ट्रू, तो 0 पे भी ट्रू रहेगा, तो इट शुड बी ट्रू व्हेनेवर इट इज लेस देन 2। तो इसमें वही सेम बात है जो हमारी जो दो कंडीशन है उसी की बात की है कि अगर हम चेक करेंगे कि अगर नेक्स्ट एलिमेंट स्ट्रिक्टली अगर पिछला एलिमेंट बड़ा है या इक्वल है तो हम जो हमारा काउंट है उसको इंक्रीज कर देंगे, और वी विल लाइक मूव अहेड, वी विल चेक कि कहाँ से मूव अहेड करना है विद द कंडीशंस जो मैंने यहाँ पे बताई। पर अगर हम चेक कर लेंगे हमारा काउंट अगर लाइक लेस देन 2 है तो वी आर रिटर्न 2, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? Okay, I assume everything is clear. So next question given for today was name plus one. इसमें कहा है you are given a large integer, जो एक integer array है उसका नाम है digits, जिसके digits को array के like each element of array की तरह store किया हुआ है, और हमें कहा है कि कोई leading zeros नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कहा है कि हमें इस जो नंबर है बड़ा नंबर है जिसको हमने जिसके ईच डिजिट को हमने एक एरे के एलिमेंट में स्टोर किया है उसको 1 से इंक्रीमेंट करना है और फिर उस एरे को रिटर्न करना है। इस क्वेश्चन को चलो सॉल्व करने वाला तो क्वेश्चन है, उसके अलावा इस क्वेश्चन से एक चीज सीखने वाली ये है कि इन केस इन फ्यूचर अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसके अंदर लाइक आपको बहुत बड़ी वैल्यू इनपुट लेनी है, जैसे लेट से 10 टू द पावर 100, आपको कोई ऐसी वैल्यू इनपुट लेनी है। अब ऐसा नंबर ना ही इंट में आता है, इंट में स्टोर नहीं होगा। अगर आपको लॉन्ग लॉन्ग पता हो, डबल पता हो, कुछ भी पता हो,
10 to the power 100 उसमें स्टोर नहीं होगा. तो दिस क्वेश्चन ऑल्सो टीचेस यू अ वे ऑफ स्टोरिंग लार्ज नंबर्स, कि आप उसके हर डिजिट को एक एरे में स्टोर कर लो. 10 to the power 100 के लिए हमें बेसिकली एरे एरे चाहिए 100 साइज की, वो तो पॉसिबल है ही. उसके हर इंटीजर को हम उसके अंदर स्टोर कर लें. दिस ऑल्सो टेल्स यू अ वे टू स्टोर लार्ज नंबर्स अपार्ट फ्रॉम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. तो इसके डिजिट्स दिए हैं और हमें कहा है कि एक से इंक्रीमेंट करना है. तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अगर हमें कोई भी नंबर है उसको एक से इंक्रीमेंट करना है तो हम उसके पहले लास्ट एलिमेंट को देखेंगे. अगर तो लास्ट एलिमेंट 9 से छोटा है, अगर 0 है, 0 1 2 8 तक कुछ भी, तो हम उसको सिंपली लाइक एक से बढ़ा सकते हैं और हमारा आंसर सिंपली सॉल्व हो जाएगा. अगर अगर वो 9 है, अगर वो 9 है तो हम इसको 0 बना देंगे और इसके नेक्स्ट एलिमेंट पे देखेंगे कि ये सेम चीज. अगर ये भी 9 है तो यहाँ पे देखेंगे. आई थिंक दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, बहुत सिंपल चीज है कि हम उसके लास्ट डेट को देखेंगे. तो अगर हम कोड में चेक करें, सेकंड, कोड में चेक करें तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम इट्स लास्ट डिजिट, जो उसका लास्ट है. अगर वो लेस देन 9 है तो सिंपल उसके लास्ट डिजिट को इंक्रीमेंट किया और रिटर्न कर दिया एरे को. अगर नहीं है तो हम उस वाले को 0 बना देंगे और फिर उससे जो कम है n-2 जो होगा उसमें चेक करेंगे एंड सो ऑन. सो दिस विल बी अवर आंसर एक कंडीशन को छोड़ के. एक कंडीशन क्या है? वो एक कंडीशन ये है कि अगर सारे एलिमेंट्स 9 हो गए तो हमें इन सबको तो 0 बनाना ही है, लेकिन आगे एक 1 भी लगाना पड़ेगा. आई थिंक दिस वाज आल्सो अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. एनी डाउट्स? फील फ्री टू आस्क. Okay, I assume everything is clear. One sec. Mm, let me open the next question. So next question was a very interesting question. So given a non-empty array of integer nums, every element appear twice except one. Find that single one. How many of you were able to do this question? May I have a quickly raise of hands? Okay, okay. ज़्यादा लोग पहुंच नहीं पाए इस क्वेश्चन तक. Okay. Anybody of you, anybody like who would like to tell me the approach in his mind? कोई भी approach, कुछ भी. So how many of you are familiar with XOR operator? Okay, many people are aware. Hmm. So in C++, we have these bitwise operators, जिनमें से एक ऑपरेटर होता है XOR ऑपरेटर, जिसका काम ये होता है कि अगर तो दो बार आ गए तो इट विल रिटर्न 0, अदरवाइज 1. तो इस केस में लाइक 2s और 2, क्योंकि ये दोनों सेम एलिमेंट है, इट विल बी 0 एंड देन 0s और 1 विल बी 1. तो हमारा 1 आउटपुट आ गया. ठीक है. तो बेसिकली
XOR ऑपरेटर क्या करता है, जब भी उसे दो एलिमेंट्स मिलेंगे तो इट विल रिटर्न जीरो, दो सेम एलिमेंट मिलेंगे, और अदरवाइज इट विल रिटर्न द एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दिस इज द केस. सो इसका और इसका जोर किया तो इट विल बी जीरो, लेकिन इसका जोर किया तो इट विल गिव टू. तो दिस क्वेश्चन वाज नॉट टफ, बट बिकॉज इस क्वेश्चन में कहा है कि यू मस्ट इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन विद लीनियर रन टाइम एंड यूज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस. उस केस में अगर लीनियरली करना है, लाइक अगर जोर से मुझे इस क्वेश्चन को नहीं करना, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं दो लूप्स बनाऊंगा और हर हर एलिमेंट को सारी एरे से कंपेयर करूंगा. अगर दो बार दिख गया नहीं, ठीक है, अगर नहीं दिखा तो आई विल रिटर्न दैट नंबर. दैट वाज द सिंपल अप्रोच, लाइक ब्रूट फोर्स अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन. लेकिन अगर इसको लीनियर रन टाइम में करना है, तो द मेथड इज जोर. वो बेसिकली क्या करता है कि जो सेम एलिमेंट होंगे वो जीरो हो जाएंगे इसके अंदर, और जो डिफरेंट एलिमेंट होगा वही बच जाएगा एक्स के अंदर, और हमने एक्स को रिटर्न कर दिया. सो लाइक एनी डाउट्स? Okay, so moving to the last question. So this was the last question. It says there are students, there is a class with m students and n exams, and you are given a m cross n matrix. इसका नाम है score. Each row represents one student, and the score array represents the score of highest student in his jth exam. We are given that the matrix is distinct, and now we are also given an integer k. Sort the students by their scores in the kth exam from highest to lowest. Return the matrix after sorting it. So this is an interesting question. Like this was our input, and our k is, in this case is k is 2. तो अगर हम सेकेंड एग्जाम पकड़े तो 9 11 3, इसको इस तरीके सॉर्ट करना है कि 11 बड़ा है तो 11 ऊपर आए, देन 9 देन 3. तो S1 सारा जो रो है वो ऊपर आए, देन S0, and then last में S2. So this is what we are supposed to do. May I know how many people reached like to this point, जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया सिर्फ? Okay, okay. So this question, for this question, there is a very interesting concept of lambda functions. How many of you are like aware about the lambda functions in C++? Okay, so this was slightly expected. So in C++, we have this concept of lambda functions, which are basically inline functions. मैं यहाँ पे sort का function लिख रहा हूँ. Sort inbuilt function है C++ का. अम, उसके अंदर like you tell कि कहाँ से कितना sort करना है. उसके साथ I have used lambda function. This is basically an inline function. ये mostly जो algorithms होते हैं, sort हो गया या फिर for each हो गया, जो inbuilt algorithms होते हैं C++ के, उनके साथ यूज होता है. To इट्स बेसिकली अ फंक्शन जिसका नेम नहीं होता और इसको तुरंत यूज कर सकते हो. इस केस में हमने से क्या बोला कि जो kth रो है, जो बड़े वाली है, उसको रिटर्न कर दो. सॉर्ट करेगा ये सारे एलिमेंट्स को, और जब भी ये, हमने इसमें दो पैरामीटर्स S1 S2 दिए, जब भी S1 ऑफ k बड़ा है S2 से, इट विल रिटर्न दिस, रिटर्न द S1. तो S1 बड़ा है तो ऊपर आ जाएगा अपने आप, रिटर्न करने के बाद में हमारी जो मैट्रिक्स थी. दिस इज अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन.
अगर आपको इससे नहीं करना तो लाइक दिस क्वेश्चन कैन बी डन यूजिंग प्रायोरिटी क्यूज आल्सो, इन विच क्योंकि 11 की प्रायोरिटी बड़ी होगी, तो वो ऊपर आ जाएगा अपने आप। हम मैंने प्रायोरिटी क्यूज से इसलिए नहीं करवा रहा बिकॉज क्यूज कोडिंग कम्युनिटी में आगे जाकर टॉपिक आएगा। दिस लैम्डा फंक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन, और एल्गोरिथम के साथ इसका बहुत ही अच्छा यूज होता है। जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम सिंपली ब्रूट फोर्स से करने बैठे तो like, बहुत लेंथी हो जाएगा और थोड़ा सा ऐसे दिमाग खराब करने वाला भी है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास, बिकॉज वी हैड द ऑप्शन टू यूज लैम्डा फंक्शन ऑन द स्पॉट, दिस क्वेश्चन वाज लाइक वेरी इजी टू सॉल्व। अगर आप लोगों के लिए दिस लैम्डा फंक्शन का कॉन्सेप्ट नया है तो आई वुड लाइक टू लाइक ऑल यू टू गो थ्रू वंस, इसको देखना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। So these were all 5 questions for today. Like we ended pretty fast. Any doubts, any queries related to this or maybe not? Yeah, Ankit, please go ahead. सर ये लास्ट वाला समझ नहीं आया मुझे या फिर Okay, अंकित आपको लैम्डा फंक्शंस पहले पता थे? नहीं सर। नहीं थे। तो मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा लैम्डा फंक्शंस हाउ इट वर्क्स। लेकिन लेकिन केस ओके, in previous question how x was storing that element which appeared only once even with XOR operator. माधव, XOR ऑपरेटर काम ही ऐसे करता है कि जब भी उसको दो सेम एलिमेंट्स मिलते हैं, इट विल इट विल लाइक इट विल मेक देम लाइक जीरो, उनका XOR करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। दैट्स हाउ, हाँ इसमें और क्या है, हाउ x was storing the element which, हाँ लैम्डा फंक्शन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लैम्डा फंक्शन सिंटैक्स इस तरीके का होता है कि फर्स्ट वी राइट स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन देयर आर लाइक टू गोल ब्रैकेट्स, एंड देन देयर इज लाइक योर फंक्शन बेसिकली। इसके बीच में अगर आपको रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना है, एरो के साथ यू टेल द रिटर्न टाइप आल्सो। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इट। इसकी कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती, लाइक कभी कभी जरूरत पड़ती है, लाइक बहुत कम, लेकिन ये भी होता है सिंटैक्स में। इसके अंदर आप बताते हो कि व्हाट आर यू कैप्चरिंग, व्हाट आर यू कैप्चरिंग। इस ब्रैकेट के अंदर आप बताते हो लाइक कि व्हाट आर योर पैरामीटर्स एंड दिस इज योर फंक्शन कोड इन ब्रैकेट्स के अंदर। फॉर द ease, let me take some like very simple example um, of using, like first I'm explaining you ki how lambda functions work. Just give me a second. Hmm. So let's say I want to create a very simple function which adds me two numbers and return it, like very simple function. So I can create it like this, and I can give two parameters a and b, and then like if I want to, like I can specify ki this is int, and inside that I can just simply write return a plus b, and like this is all happening in main function, and then you can like simply see out, like I can name it something like maybe add, I can name it, and then I can see out add any two numbers, just anything, right? So this is a very simple example of lambda functions in which I have created like an inline function and use it on the spot. I can actually, let me open an online compiler for easier understanding.
My internet is little slow, I guess. So let's say name a simple function, add, and I use square brackets, give the parameters, and then I can specify the return type, and I can return this. Then I can simply like see out this thing like like a normal function. This should be working. Oh yeah. So this is a simple example of lambda functions, which like inline functions as lambda. Um, if you like want to uh, know about this square bracket, like I can add a new thing. Let's say there is a variable x named 4, and I can capture it over here like this and use it along like this. So the 4 will be added automatically as the x. So this is the basic functioning of lambda functions. Was I able to explain you, or there is still doubts? Can I know? Okay, I got like thumbs up from two people. I assume समझ आ गया. But custom comparator is not clear. अच्छा. Hmm, सर x को a और b के साथ भी तो डाल सकते थे. अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि मैं थर्ड पैरामीटर दूं? हाँ, वो भी दे सकते हो. Like there could be a situation ना जहाँ पे this is a fixed thing and not a variable thing, and आपको चाहिए उस स्पॉट से, या फिर ये आपको x कहीं और से चाहिए, तो उस केस में आपसे you can like put it instead of two parameters. इस केस में हो सकता है कि आप x को साथ में एक तीसरा पैरामीटर बनाकर डाल दो, लेकिन there, like I'm just telling you the syntax. Otherwise, there could be a cases जहाँ पे you need to capture it. This is a pretty straightforward example. That's why it seems कि. Okay, let me give you one more example for um, for lambda functions. Let me let me include vectors, and let me just. So let's say there's a vector a, some numbers, and I can create a like function which will like
print them mm, something like this. Um, like sort. So we can say a dot begin to a dot end, and we can um, like capture connect as two parameters into b, and we can return whenever a is greater than b. So by default, the sort function, if you see the sort function, sort the things in ascending order. But now I have like put a lambda function with it, which should return in descending order. So I can, if I quickly print this thing, so mm, we can remove this. अच्छा yes, sort के लिए we need this sort function is like inbuilt in Python, so just need to add it. Yeah, so it is giving now in descending order because we have told it to return it like the larger number first. So like this could be another example, and this is very similar to what we have done in the question. जो बड़ा है उसको ऊपर आए. Um, is this thing clear? Any doubts? Like, are you guys getting the gist of it? Like, what's like lambda functions and how they are used? Maybe you can like read a couple of articles in GFGs and you will be good to go. Like whatever examples I can think on the spot. I'm just trying to help with that. Any other doubts? Can you explain how matrix is getting sorted? It's like very similar. Sankalp, do you get this the last code I wrote by like sorting this single vector, a single like 1D vector? Okay, you got it. तो बिल्कुल सेम तरीके से, सॉरी नॉट दिस, दिस इज द क्वेश्चन. जब वेक्टर और वेक्टर है तो जहाँ पे उसके लिए द सेम थिंग, उसके लिए देयर आर वेक्टर्स. तो जो kth एलिमेंट है, बेसिकली जो kth वेक्टर होगा, उसमें से जो भी बढ़ाऊं, ओके लेट मी वेट. सो S1 का हर एलिमेंट इज अ वेक्टर, राइट? एंड उस S1 का जो kth एलिमेंट है, अगर वो बड़ा है तो वो ऊपर आए इन बिटवीन S1 एंड S2. तो ये एक 2D मैट्रिक्स है. इसमें S1 एंड S2 आर ईच वेक्टर्स. S1 का जो kth है, अगर वो बड़ा है तो S1 ऊपर है. दिस इज हाउ इट इज गेटिंग sorted in this question. समझ आया संकल्प?
isn't it getting swapped between the vectors? Uh, I mean, what we are trying to do is sort of swapping only. कि अगर अगर 11 बड़ा है तो 11 और 9 स्वैप हो जाए. What's your doubt? I didn't get it properly. No, no, no. Vectors will not get modified. Input vectors are getting modified. I don't think there is any modification. It's just comparing and putting like and arranging them in the question. We have to compare column wise in place of row wise here in the question. Yeah, you can do it similarly. अगर कॉलम वाइज करना होगा तो मे बी वी कांट डू विद दिस बिकॉज आई कॉमा जे होता है तो दैट वुड बी इजियर. उस केस में तो हम बेसिकली लाइक सिर्फ इस चीज को कंपेयर करना है ना, सिर्फ S1 को कंपेयर करना है, तो वी कैन जस्ट टेक द S1 वेक्टर एंड लाइक shuffle it around. उस केस में वी डोंट नीड like lambda function and all this stuff. That would be like pretty straightforward. We can easily get the indices and we can just arrange it in case of column wise, right? So any other doubts? Hmm. I guess this is clear. Um, this like this concept might be like new for many people of lambda functions, and it's a cool concept. Maybe not used at many places, but is very helpful whenever needed. And the the motivation behind giving this question was to like maybe people will do a little research on lambda functions. That was the main motive behind giving this question. And I would like you all to just give a go through on like articles, maybe some if you find some good video on lambda functions and it's so that's it for today. Thank you so much. You can leave if there is a doubt. Like anybody can stay if there's a doubt. Thank you, Jatan.